हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और PYQ सीरीज़ में हम कर रहे हैं RPSC कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2016 के जो सभी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द पोएट हु रोट द पोम्स द लॉजिक, इंडियन समर पोम, द होर हाउस इन अ कैलकाटा स्ट्रीट एंड अ मिसिंग पर्सन। So the options we have for this question: Jayant Mahapatra, Rukmani Bhaya Nair, Giv Patel and A.K. Ramanujan. So the right answer of this question is Jayant Mahapatra. So let's see the explanation. Jayant Mahapatra is the first Indian poet to win a Sahitya Academy Award for English poetry. He was the author of poems such as Indian Summer and Hunger, which are regarded as classic in modern Indian English literature. He was awarded a Padma Shri, the fourth highest civilian honor in India, in 2009. But he returned the award in 2015 to protest against rising intolerance in India. So let's see the next question, 132. R. Parthasarthi's poem Exile examines the question of the. So R. Parthasarthi जो हैं उनकी एक पोम है Exile, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है. The options we have: advantages of writing in one's own language, advantages of living in a new culture, loss of identity with one's own culture, or disadvantages of living in one's own culture. So the right answer of this question is option C, loss of identity with one's own culture. आइए अब इसकी explanation देखते हैं. R. Parthasarthi is an Indian poet, translator, critic and editor. His translation into modern English verse of the 15th century Tamil epic, The Tale of the Anklet, the Epic of South India, received the Sahitya Academy Translation Prize in 1995. Parthasarthi's poem Exile, which is one of the three sections of a long poem, Rough Passage, written during a period of 20 years. The poem reveals poet's cultural dilemma and the issue of language and identity. The first section of Exile explains the colonial past of the nation using the poet's personal past. So this was all about the poem Exile. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरुण कोलाटकर की पोम जेजुरी से पूछा गया है. ये जो वर्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन या इस वर्क से जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं. अरुण कोलाटकर्स पोम जेजुरी ऑसिलेट्स बिटवीन. सो ऑप्शंस वी हैव अर्बन एंड रूरल लाइफ, फैंसी एंड इमेजिनेशन, लव एंड हेट एंड फेथ एंड स्केप्टिसिज्म. सो the right answer of this question is option 4, faith and skepticism. Explanation. Arun Kolatkar was an Indian poet who wrote in both Marathi and English. तो ये जो languages होती हैं जिसमें जो writers होते हैं वो लिखते हैं, ये भी important है. कई English literature के exams में ये पूछ लिया जाता है कि जो राइटर हैं उनकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं. तो इंग्लिश तो आपको लगभग पता होती है, उसके जो दूसरी लैंग्वेज है उसका भी आपको ध्यान रहना चाहिए. हिज पोम्स फाउंड ह्यूमर इन एवरीडे मैटर्स. जेजुरी इज अ सीरीज ऑफ पोम रिटन बाय इंडियन पोइट अरुण कोलाटकर consisting of a sequence of 31 poems. Jejuri depicts Kolatkar's visit to Jejuri, a city in Pune, which the poet visited in 1964. Jejuri won the Commonwealth Poetry Prize in 1977. The poem is made up of a series of often short fragments which describe the experience of a secular visitor to the ruins of Jejuri. So this was all about the poem Jejuri. Next question. Asif Karim Boy's play Goa is about. तो आसिफ करीम बॉय जो है उन्होंने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है गोवा. तो वो किस बारे में है ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शंस वी हैव द लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द पोर्टुगीज पीपल लिविंग इन गोवा, और द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द पोर्टुगीज पीपल. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, द लिबरेशन ऑफ गोवा. So in explanation,
हम देखते हैं कि आसिफ करीम बॉय इज़ एन इंडियन प्ले राइट हु रोट इन इंग्लिश. हिज वर्क इनकॉर्पोरेटेड मोनोलॉग्स, choruses, chants, songs, mime, slide projection, and filmed footage. So his first play गोवा, तो इनका ये जो डेब्यू प्ले है गोवा, written in 1964, deals with the racial discrimination as a paradigm of post-colonialism. A political play, Goa deals with the India's takeover of Portuguese colony of Goa in December 1961. Next question. Question number 135. When Mahesh Dattani's play Dance Like a Man ends, the young couple Lata and Vishwas. तो देखिए महेश दत्तानी जो हैं वो बहुत ही फेमस प्ले राइट हैं. उन्होंने बहुत सारे फेमस जो प्लेस हैं वो लिखे हैं. उनमें से एक है डांस लाइक अ मैन. तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ये जो प्ले है डांस लाइक अ मैन ये एक एंड होता है तो इसमें जो यंग कपल है लता और विश्वास वो उनकी मैरिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो ऑप्शंस वी हैव आर होपिंग टू गेट मैरिड, आर ऑलरेडी मैरिड, are disappointed that they can't get married, or are waiting to the approval of their parents to get married. So the right answer of this question is option number 2. They are already married. Let's see the explanation. Mahesh Dattani is an Indian director, actor, playwright and writer. He is the first playwright in English to be awarded the Sahitya Academy Award. फ्रेंड्स ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं, मैन बुकर प्राइजेस हैं, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइजेस हैं, इन सभी को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डांस लाइक अ मैन इज़ अ प्ले बाय महेश दत्तानी विच डील्स विद द डॉगमा ऑफ बीइंग अ मैन इन 1940s of the Indian society. Although the story revolves around a dancer couple and their family, but the emotion of the play lies in the emotional and social dance. Jairaj did dance to the tune of his father, his dancer and intelligent wife, and to the tune of this society. This play deals with the recent and ancient history of India in personal terms, probing 3 generations of a conflict against a background that evokes the highest achievements of ancient Sanskrit theatre and classical religious dance. So this was all about 5 questions, 131 to 135. In next video we are going to have a discussion regarding 136 to 140 questions. ये जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 135 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड 3 वीडियोस आर लेफ्ट. 3 वीडियोस और आएंगे तो आपका ये जो पेपर है पेपर सेकंड ये कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम पेपर 1 शुरू करेंगे जिसमें ग्रामर का और लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी का पार्ट आएगा. So these are the must watch videos if you are preparing for UGC NET and Assistant Professor English and many more examinations of English literature. So अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.